Hi friends, before we start this webinar, just a small disclaimer that this webinar is for the global clients. So whichever country that you are seeing this webinar from, please do the due diligence because every country has their own rules and regulations regarding the CFD market. Second important disclaimer is that whatever things that are going to be discussed in this webinar is going to be purely and purely from the education standpoint. There is not going to be any investment advice in this webinar. Financial markets contains risk, so make sure that you always consult your financial advisor before taking any investment or trading decisions. We also have clients from Middle East, so we'll make sure that we'll also keep the session in Hindi and English both. With that, let's start. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी के कमोडिटीज के ऊपर. So we are going to discuss on two different commodities, that is the natural gas and the crude oil, that is the US oil. So currently we are looking at US oil and we are going to do the macro analysis first, and once we are through the macro, then we can go to the micro part and we can discuss even further levels from the trading perspective and angle. So the crude oil prices have बेसिकली कंसोलिडेटेड अ लॉट. अगर आप देखोगे तो काफी साइडवेज मूवमेंट क्रूड ऑयल में रहा है, और डेफिनेटली यस, वॉलेटिलिटी का जो रेजिम है वो तो था ही, लेकिन साइडवेज में बहुत टाइम स्पेंड किया. तो मेजर अमाउंट ऑफ जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो सारे के सारे की लेवल्स के जैसे प्ले आउट हुए. हमने क्रूड ऑयल को हमारे पीछे के जो सेशन से प्रीवियस हमारे टेलीग्राम के पोस्ट है उसमें भी हमने क्रूड ऑयल के लेवल्स को कवर किया है. अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर दैट यू आल्सो गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल. सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन क्रूड ऑयल राइट नाउ. तो अगर हम इसमें पीछे के जो इसके लेवल्स अगर उसे हम देखें तो फेयर वैल्यू गैप करके कॉन्सेप्ट है जिसे मैं भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँगा. सो एज पर द फेयर वैल्यू गैप वी हैव हैड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स ऑन दिस पर्टिकुलर गैप. सो अभी इस पे जो सपोर्ट हमने देखे ऑब्जर्व किए वो 15 मार्च 2021 को भी था, 7 अप्रैल 2025 को हमने सपोर्ट लिया है, 5 मई को हमने सपोर्ट लिया है, 13 अक्टूबर को सपोर्ट लिया है, 15 दिसंबर को सपोर्ट लिया है. सो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ नहीं तो भी 5 से 7 टाइम ये लेवल को टेस्ट किया है जो फेयर वैल्यू गैप का सपोर्ट है. फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का काम करता है, तो जहाँ पे इंस्टीट्यूशन या फिर स्मार्ट लिक्विडिटी प्लेस्ड होती है. सो प्रीवियस जो हाई है वो भी फेयर वैल्यू गैप के करीब करीब से ही वहां से मूवमेंट आई है. सो मैक्रो लेवल पे अगर हम देखें, सो वी हैव हैड मल्टीपल टच पॉइंट्स ऑल ऑन दी एफसीजीज, एंड जो रेंज है वो काफी हद तक रिस्पेक्ट हुआ है क्रूड ऑयल में. ये एक बात हो गई हमारे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की. सो नीचे की जो रेंज है वो 57 से लेके 53 की है मैक्रो लेवल पे, और ऊपर की जो रेंज है वो 75 से लेके ऑलमोस्ट 77 तक की रेंज रही है इतने लास्ट जो भी हमारा ईयर था उसमें. तो एक साल से हम एक ही रेंज के अंदर में बेस आउट कर रहे हैं. अगर हम ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करके और लेवल्स को आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पे क्रूशियल लेवल देखने को आएगा ट्रेंड लाइन के बाद. सो वी हैड अ मल्टीपल टचेस ऑन द ट्रेंड लाइन ऑल्सो, एंड दिस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस वाज कवर्ड इन अ प्रीवियस वेबिनार्स एज वेल, ऑल्सो ऑन अ टेलीग्राम चैनल. तो वहाँ का जो रिजेक्शन था उसके बाद में अभी तक कोई भी क्रूड ऑयल में सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट या ब्रेक थ्रू देखने मिला नहीं है. जो अपकमिंग रेजिस्टेंस अभी हमारे सामने है वो 68 के रेंज पे. सो on the macro level we have 68, that is one trend line. Let's draw one more trend line from another high so that we can get a clear picture. So if we break 68.20 or 68.30, then we might look for 71. So these are the upcoming levels, and because we have taken support multiple times on fair value gap, there is a very high probability that it might touch resistance also moving forward. So let's see how does it play out. These are the levels that we can see as of now on the macro scale, and moving forward it is still, we can say that crude oil is still sideways, and it will do this same repetitive pattern what it has done in past, is touching the supports and the resistance, and still making a range. So this is what could be still the plan of crude oil moving forward. So let's see how does it work out. We'll obviously post the post follow through sessions in Telegram channel also. So this is what we'll cover moving forward for sure. This is what we see on the macro level for crude oil.
And if we talk about the micro part now, let's go a bit in depth and see what's happening on the micro scale. So now we are on the intraday scale, and we had seen the higher top, higher bottom formation constantly on intraday. So this is what we are doing. And as we just analyze right now, we have an upcoming resistance which is nearly at 6860 on trend line. So possibly what could now happen is that we are experiencing a sideways range on intraday. So even if you see a 240-minute chart, or even if you see a 60-minute chart, we'll experience the same range over here. And on intraday basis we are currently technically trading sideways. So अगर ये breakout जो है वो ऊपर के साइड में अगर हो जाता है तो चांसेस थोड़े ज्यादा है कि हम फिर से जो ट्रेंड हमारा पीछे से जो चलते आ रहा है, शायद से हम उस ट्रेंड को फिर से कंटिन्यू करने में केपेबल रहे, और उसके बाद में शायद से वो ट्रेंड फिर से इमर्ज हो सकता है, क्योंकि उसके पास जो मैक्रो स्केल पे जो रेजिस्टेंस है वो 68 पे है. सो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अगेन देयर कुड बी अ बुलिश मूवमेंट. एंड इफ यू आर अ डे ट्रेडर, इफ यू वांट टू डू क्विक स्कैल्प आफ्टर यू ब्रेकआउट, और यू वांट टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग, so you can always look out for these levels. And if you want to book your profits very fast, then probably after the breakout you can look for 6650 or 60, all these resistance level which can later on come up. So that is the situation for crude oil. So if we talk about the intraday charts, they are yes consolidating, it is sideways. Daily is also majorly sideways, but the breakthrough can probably take us to the higher level. So let's see how does it pan out and what happens. Does it break out or does it still remain sideways? So we'll post this on Telegram and we'll cover the live action over there as well. So this is about the crude oil, and now let's go and talk about natural gas. So natural gas had a very high volatility in this past couple of sessions, and it has given 10-15% bounces and also 10-15-20% fall from its high. So the ride has been very volatile. Again, when we talk about the macro part, on the macro scale we had a fair value gap open, and we have had multiple supports on fair value gap. In fact, even the last bounce that natural gas had given was from the FVG. तो एफवीजी ने अच्छा काम किया है, और अगर इसके पीछे के हम हाई को देखें तो पीछे का जो मैक्रो लेवल का है वो भी जो हमारे इंस्टीट्यूशन लेवल्स होते हैं वहां से ही रिवर्सल हुआ है. सो वी कैन इजीली मेक आउट दैट देयर इज अ बिग रेंज, और रेंज के बीच में यूजुअली जो लोग ट्रेड करते हैं वो लोग मीन रिवर्जन वाले होते हैं. सो वेरी गुड स्पॉट और अ वेरी गुड एरिया फॉर मीन रिवर्टिंग ट्रेडर्स. So let's talk about this. First of all, we've had a good FEG, and if we also connect our trend lines, and yes, we also had a trend line support. So there were multiple support levels which natural gas had offered recently. So coming back now after a bounce, and what we are seeing that after a bounce we are again seeing the pullback. So because it's a range bound market, again traders might look for these levels for their day trading or for their mean reverting ideas or for the scalp part. And till the time we are holding this fair value gap on the upside and also on the bottom side, we might experience the high volatile regime in natural gas, but more or less with a range bound movement. So till the time we are in above the FVG, it's a buying opportunity, or the traders who are looking for, they might look for the buying opportunity over here, and they might try to mean revert. That is what we can see from the levels that are building up right now. And if we break below, then after breaking down we might extend further to some other levels, which are the other FVGs which are open below. So let's see what happens in natural gas. As of now, it's a range bound area, and it is still consolidating. So not much of an action in terms of trend we might see. That is what the charts are saying. And this is where the volatility has even halted. So once we reach those levels, I think this is where the more opportunities might come up for people who are active traders and mean reverting traders. So going back to the lower time frame, again on the lower time frame we had certain breakthroughs. So these are the breakthroughs that we have seen, and after the breakthrough there was a follow through trend on the downside. So the intraday charts aren't looking so much positive as of now. So in short, if we conclude the natural gas part, it
it is still more of a sideways area, and these are the only confidence level that currently natural gas has in terms of looking from the buyer's angle, and from the traders who usually are looking for mean reverting or selling opportunities. They might look for these areas to come back on, and the areas where there are smart institutional levels, there are supply areas. So this might act as a resistance for short-term traders. So we are in between. It's a wait and watch scenario. Market is also deciding, traders are deciding which area it has to go for, and the next part of decision will be very clear once we hit any of those levels which we discussed. So that's all about the natural gas part as well. So with that, if you want कि हम कोई ऐसे पर्टिकुलर एसेट क्लास पे अगर वीडियोस क्रिएट करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो हम आपके सामने उसी टाइप के एनालिसिस को भी लेकर आएंगे, और विल मेक श्योर कि हम आपको उसकी भी इंसाइट्स एकदम क्लियर और सही तरीके से प्राइस एक्शन के मोड में हम आपको इसको एक्सप्लेन करें. So with that, thank you so much for joining, and see you again very soon in our next analysis video.